Hello, Assalamu alaikum, and a very warm welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing very well. So, my dear YouTube family, today I'm gonna give you a presentation about connectors. So, actually, I found this PPT in my phone that I used to present during my university time in I don't know which semester. So, here we go. What's connectors? Okay, so what is connectors? The presenter is obviously आपका अपना host and दोस्त हकीमा बानो अली. Anyways, so what is a connector? Connector means one that connects, right? So there is an example. If there is a bridge on the canal, people can easily connect with the people of the other side, right? कहीं पे कोई नहर दरिया कुछ होगा तो एक साइड से दूसरी ओर जाने के लिए हम एक चीज़ का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, दैट्स ब्रिज, जिसे हम अपनी भाषा में जम्बा कहते हैं. तो इसका क्या काम होता है? जम्बा आसान कर देते हैं हमारा जो एक साइड से दूसरी साइड आने जाना, दैट्स कॉल्ड कनेक्टर. सो सेम इज द थिंग विथ कनेक्टर इन कम्युनिकेशन. सो कनेक्टर्स और लिंकर्स भी इसको कह सकते हैं, जो लिंक करे, दैट मीन्स sentence connectors. So here we are talking about sentence connectors, right? So what is connector or linker? A connector or linker is a word that works as a conjunction to join two or more words, phrases and clause together. So connector एक word है जो as a conjunction काम करता है. दो या दो से ज़्यादा अल्फाज, दो से ज़्यादा या फ्रेजेस होते हैं, जुमले या जो क्लॉज होते हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है. कौन? कनेक्टर. ओके, सो व्हाई डू वी नीड देम? हमें इन कनेक्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वी नीड देम बिकॉज हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि they join ideas and show how those ideas are related to one another. So वो क्या करते हैं? आइडियाज़ को भी ज्वाइन करते हैं ताकि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि एक आइडिया जो दूसरे से कैसे आपस में जुड़ा हुआ है, लाइक कितना रिलेटेड है. ठीक है. सो इसके अलावा द हेल्प अस ऑर्गेनाइज आवर आइडियाज़, हमें अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है. इसके अलावा इट्स ईजियर फॉर द रीडर्स टू फॉलो. सो जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी आसान हो जाता है फॉलो करने के लिए. नेक्स्ट, लाइफ इन द हिल. हियर यू कैन सी लाइफ इन द हिल. यहाँ पे सिंपली लाइफ इन द हिल ही लिखा है, राइट? सो वेट, देयर इज़ अ डिफरेंट वे. अब इनके पास एक आइडिया है कि एक डिफरेंट वे है जिस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं. ठीक है, लाइफ इन द हिल. सो यहाँ देख लीजिए, लाइफ इन द हिल इज चैलेंजिंग. सो हिल्स में जो लाइफ है, ज़िंदगी, वो क्या है? चैलेंजिंग है. लाइक वी आर इन लद्दाख, सो लद्दाख में लाइफ स्पेंड करना इट्स अ काइंड ऑफ चैलेंजिंग, राइट? सो यहाँ पे कनेक्टर का इस्तेमाल किया है जो कि है देयरफॉर इट कैन बी वेरी एक्साइटिंग. सो क्या हो सकता है? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकता है. जहाँ पे चैलेंज होगा वहाँ पे तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट होता है. सो नेक्स्ट, हाउ कैन वी लिंक दीज सेंटेंसेस? अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, अब हम इनको कैसे लिंक करेंगे? पहले सिंपली जो सेंटेंस है आप वो देख लीजिए. आई वेंट टू अ पार्टी, मैं एक पार्टी में गई. द म्यूजिक वाजंट गुड, म्यूजिक अच्छा नहीं था. आई डिसाइडेड टू स्टे एनीवे, मैंने वहाँ पे कैसे भी रुकने का सोचा. आई मेट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से मिले. वी हैड अ ग्रेट टाइम, हमने एक अच्छा वक्त स्पेंड किया. दैट्स इट. सो ये है विदाउट एनी कनेक्टर. नाउ हम इनमें किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? कनेक्टर्स का. आई वेंट टू ए पार्टी, मैं एक पार्टी में गई. बट, लेकिन द म्यूज़िक वाजंट गुड, लेकिन वहाँ पे क्या था? म्यूज़िक जो है वो अच्छा नहीं था. आई डिसाइडेड टू स्टे एनीवे, मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं वहाँ पे रुकूंगी. बिकॉज, क्योंकि आई मेट माई फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से मिली. एंड और वी हैड अ ग्रेट टाइम, हमने एक ग्रेट टाइम वहाँ पे स्पेंड किया, राइट? So this is how we can use these linkers or connectors in a sentence, right? So can you find a different way to link those sentences? यहाँ पे एक different तरीका आपको, ये जो हमने ऑलरेडी किया ऊपर सेम है, लेकिन ये एक डिफरेंट तरीका है. आप यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कनेक्टर्स हैं. connectors of addition, connectors of contrast, etc etc. So यहाँ पे
connectors of addition क्या क्या हो सकता है? Additionally, furthermore, in addition, moreover, similarly, likewise, in the same way, besides, not only, but also. So these are some connectors of additions. Okay. Now see if you can add some connectors. अब देख लीजिए आप इनमें कोई कनेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं. Yes, we can. Like जैसे यहाँ पे लिखा है learning English is important. It is a useful language. It's the international language. You should learn it. You can travel around the world. You can communicate with people all over the world, right? So where we can add connectors? So यहाँ देख लीजिए हमने already करा है. Learning English is important and एक connector है. It is a useful language. As it's a international language, you should learn it. You can travel around the world and you can communicate with people all over the world, right? Next, these are some connectors of contrast, okay, to mean different. However, nevertheless, although, though, even though, in spite of, despite, in contrast to, on the other hand, whereas, while, on the contrary. So these are connectors of contrast, okay. So the next one is, remember that we should always use a comma after however and therefore. हमें क्या इस्तेमाल करना है? Comma, okay. Next, although, even though, despite, in spite of. So यहाँ पे दो आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. वन इज इनकरेक्ट एंड अनदर वन इज करेक्ट. सो द इनकरेक्ट वन इज although that I hate rainy days, we desperately need water in our tent. So this is the wrong one, okay. And the right one is, although I hate rainy days, we desperately need water in our tent. So we should use a noun phrase, okay, and we should not use a complete sentence after although and despite. Got it? Now there are some connectors of cause and effects. Okay, so therefore, consequently, as a result, thus, for this reason, because of, in order to, so that, right? These are some connectors of cause. Now connectors of sequence. ये बहुत टाइम हमें like mostly जब आप कोई इवेंट कवर करने जाते हैं या कहीं पे प्रोग्राम स्केड्यूल्ड हो, फर्स्टली ये, सेकंडली ये, थर्ड, तब आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं इन कनेक्टर्स को. सो सम कनेक्टर्स ऑफ सीक्वेंस आर फर्स्ट, फर्स्टली, सेकंड, सेकंडली, थर्ड, thirdly, etc. Next, afterwards, after that, eventually, finally, before that, and beforehand. Okay, so some other connectors are fortunately, unfortunately, luckily, obviously, for example, for instance, and such as. So these are some examples of connectors. I hope you like it. Don't forget to subscribe to my channel, like, comment and share. Thank you all very much. Stay connected like a connector. Bye-bye.